Hello everyone, my name is Pavita, Assistant Professor in CSC Department 8 RPIIT Campus Bastada Karnal. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content of this channel, please don't forget to subscribe and save the content. Let's talk today disk structure. Class outline, storage and mobile technology, disk structure, physical structure, logical structure. Learning objectives. At the end, you will be able to describe the basis of disk structure, explain how information is stored on a drive. डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डाटा। डिस्क हमारा क्या एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। डिस्क प्रोवाइड अ मीन्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटर। इसमें हम स्टोर करते हैं हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को मॉडर्न कंप्यूटर के लिए। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। Storage technology that is defined in this picture. You can see first on floppy, then GIP, jazz, tape, hard, CD, DVD, optical, and USB pen. Disk structure. A disk is usually drive to track cylinders and sectors. Hard disk drive are organized as a stack of disk platter like that is defined in this picture. Each platter has two surfaces and two read and write head for each surface. Each platter has the same number of tracks. Platter is made from aluminium or glass coated with the magnetic material such as iron oxide. Explored via of hard drive. First one is platter, then read and write head, then spindles, extras and housing, power connector and PCB. Disk geometry. Platter resembles a phonographic record found in the old-fashioned jukebox. Multiple platter increase storage without increment increase in cost. Head. Each platter is associated with the read and write head. There are energy converts in, that is they are transfer electric signals into magnetic wire write to disk and vias versus read the writes. Track circular areas of the disk, length of track 1 over 1000 on a hard disk, data first written to outermost tracks, sector divided track sections. Cylinders. Logical grouping of the same track are is disk surface in the disk unit, or all the tracks within the same radius are known as cylinders. Clusters. Several sectors from a cluster. 64 sector in one cluster group of secondary sector used by operating system. Platter. A rounded magnetic platter that consists a part of a hard disk. Hard drive can contain a dozen of platter mounted in the same spindles. Platter require two read and write heads of one for each side and therefore can store information on the both side. ये हमारे पिक्चर में डिफाइन किया गया सेक्टर्स को प्लेटर्स को डिवाइड सेक्टर इसमें ट्रैक एंड देन प्लेटर्स है. ट्रैक हमारे क्या है, डाटा इज स्टोर्ड इन द circles on the surface known as track. Corresponding track on all the platter surface make up a cylinders. Numbering start with 0 at the outermost cylinders. That is defined in this picture: track 0, track 1 and track 2. Sector. A sector is a continuous linear stream magnetized the bits occupying covered section of track. Sectors are the smallest physical storage unit on the disk. Each sector stores 512 bits of data. नंबरिंग फिजिकल सेक्टर विद इन द ट्रैक स्टार्ट विद 1. इसमें सेक्टर्स में डिफाइन होता है हमारे 512 बाइट्स को डाटा को डिफाइन करता है. और क्या करता है फिजिकल सेक्टर में विद इन द ट्रैक स्टार्ट विद 1. दैट इज डिफाइन इन दिस सेक्टर ट्रैक 0 सेक्टर 1, ट्रैक 0 सेक्टर 2. Cluster blocks. One or more contiguous sectors, the smallest pieces of storage that an operating system can place into data. The bytes in the cluster vary sector according to the size of the drive and the version of the operating system. Disk capacity. One method of the calculating disk capacity is the multiply the number of cylinders, heads and the sectors, that is CHS, together and then the multiply by the clock size of the 512 bytes. Logical structure. Basically, we can divide logical structure of the hard disk in the following 5 logical terms. First one is MBR, master boot record, then DBR, DOS boot record, then FAT, file allocation table, then root directory, then data area. MBR के हमारा master boot record है. It is the sometime referring the master partitions table, that is called MPT. It contains small program load start the active partitions from the hard disk. The MBR is created on the hard disk drive by the executing FD command and those there is the MBR like. It is located in the absolute sector 0. We can say cylinder 0, head 0 and sector. If we have more than one partitions, there are the extend master boot record located in the beginning of each extend partition volume.
फैट हमारा क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, जो हमारा डिफाइन करता है फैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977 टू स्टोर डाटा, हैज़ बीन मॉडिफाइड सेवरल टाइम्स टू अकोमोडेट एक्सपेंडिंग नीड्स। हमारा ये फैट हमारा क्या डिफाइन करता है, फाइल एलोकेशन टेबल को डिफाइन करता है। ये 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये क्या करता है, हमारी जो फाइल्स होने जो मॉडिफाई हुई हैं सेवरल टाइम्स में, उन्हें क्या अकोमोडेट करता है, एक्सपेंडिंग नीड्स के। इट वॉज डेवलप्ड इन द फुलफिल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फास्ट एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉर मैनेजिंग डाटा ऑन both removable and fixed media. Fat gives us map of the complete surface of the disk drive such that which area is free, which area is taken up by which file, etc. When some data stored on the disk to be accepted the dose, consult the find the areas of the hard disk which contain the data. रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी मतलब क्या है, द रूट डायरेक्टरी इज लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारा क्या एक लाइक टेबल की तरह होता है, जो क्या करता है, स्टोर करता है, कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन जो हार्ड ड्राइव में है। द डायरेक्टरी आर गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल नेम, डेट एंड टाइम, द फाइल क्रिएशंस, फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल साइज, स्टैंडर्ड क्लस्टर एंड द पर्टिकुलर फाइल। इसे डिफाइन करता है डायरेक्टरी में हमारी फाइल की इन्फॉर्मेशन को, डेट टाइम को, उसकी क्रिएशंस को, साइज को और क्लस्टर स्टार्टिंग जो पर्टिकुलर फाइल्स की हैं। द नंबर ऑफ फाइल्स दैट वन कैन स्टोर ऑन द रूट डायरेक्टरी डिपेंड ऑन द फैट टाइप बीइंग यूज्ड। Data area or files area. The remainder of the value after root directory is the data area. The data area contains the actual data stored on the disk surface. When we format hard disk, the format command of DOS does not destroy or overwrite the data on the data area. The format command only remove directory entry and fat entries and does not touch the actual data area. This makes the recovery of accidentally formatted hard disk drive possible. Thank you so much for watching this video.